topic of the day is Kepler's law of planetary motion. So the first law is law of orbits. Kepler suggested that all the planets are revolving on elliptical paths. This shape is called an ellipse. So all the planets are revolving around the sun in elliptical orbits. And elliptical orbit has two focus. So the sun is situated at any one focus. Okay students? Means जितने भी planet हैं वो sun के चारों ओर elliptical path पर चलते हैं. ये जो शेप आपको दिख रही है उसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स. ठीक है? और एलिप्स में दो फोकस होते हैं. सन उनमें से किसी भी एक फोकस पर जो है सिचुएटेड. ठीक है स्टूडेंट्स? सो द फर्स्ट लॉ इज ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज एट एनी वन फोकस. ओके स्टूडेंट्स? नाउ वी विल मूव टू द सेकंड लॉ. सपोज दिस इज an elliptical orbit. This is the focus where sun is situated. This is the focus where sun is situated, and this is the planet. So this is the elliptical orbit in which the planet is performing its motion around the sun and sun is at any one focus. Okay students? Now we draw a line. So the line is joining sun to the planet. Okay students? Suppose in t1 time interval the planet reaches to this position. So the new line becomes this one. So in t1 time interval, the line covers this area. Suppose it is area. Okay students? Now we will discuss another two positions when the planet reaches from this point to this point and takes time t2. Okay? So the position of line changes in this way. And suppose the area covered now is 80. Then second law says if t1 is equal to t, if t1 time interval is equal to t2 time interval, it will simply imply that a1 is equal to, means if the planet takes same time interval, the line will cover the same area. Okay students? मतलब क्या है कि ये जो लाइन है जो सन और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है ये सेम टाइम में सेम एरिया को. ओके सर? सो द सेकंड लॉ इज द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट कवर सेम एरिया इन सेम टाइम इंटरवल. ओके सर? सिंस इट इज कंसीडरिंग एरिया दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरियल स्पीड. ओके स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया, सेकंड लॉ भी समझ आ गया. नाउ वी विल proceed to the next law, that is third law. So what is third law? Suppose the time taken to complete one revolution around the sun by any planet is capital T. Okay students? मान लिया कि जो planet है उसको एक पूरा जो अपना एक चक्कर है वो पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है वो है t. ठीक है स्टूडेंट्स? अभी अगर हम लोग एलिप्स की बात करें तो देखिए एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं. ठीक है? एलिप्स में दो एक्सिस होती हैं. मान लीजिए ये एलिप्स है तो इसमें दो एक्सिस होगी. एक ये एक्सिस होती है और एक ये एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. ठीक है? इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. और ये वाली जो एक्सिस है ये इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस. ठीक है? So an ellipse contains two axes. The short one is called minor axis and the second one is called major axis. Okay sirs? And this is the half part of major axis. This is the half part of major axis. Let us consider it as A. मान लीजिए जो आधा पार्ट है मेजर एक्सिस का वो हम मान ले रहे हैं A. तो थर्ड लॉ क्या है?
the time period of any planet on its elliptical path around the sun, that is t, and the semi major axis, that is it. These two quantities are related in the third law. So the third law says square of time period of any planet around the sun on its elliptical path is directly proportional to the cube of semi major axis. Okay students, so this is third law. Since it is related to the time period, it is also called law of time periods. Okay students, so here we have discussed all the three laws. The first one was all the planets are revolving on elliptical paths and sun is situated at any one focus. And the second law is the line joining sun to the planet covers same area in same time interval. And the third law is square of time period of any planet around the sun on its elliptical path is directly proportional to the cube of semi major axis. Hope you have understood all the three laws very clearly. Thank you a lot.